Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English text for class 7 and this is lecture number 23. My dear students, I hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we will do exercise number 6 of page number 31. And we have to do this exercise into the notebooks, so kindly take out your notebooks and do the work with me. Exercise 6 is, each of the student is feeling sad or upset for two main reasons. Read the text to find out what these two main reasons are for each one of them. Write the answers in the notebook. My dear students, we read unit 2 in the form of letters, in which the students share their problem with their elder brothers and express their feeling. So we have to find out the reasons why they are feeling sad or upset and write the answers in the notebook in the following pattern. बेटा हमने यूनिट 2 पढ़ा जिसमें हर स्टूडेंट सैड है या अपसेट है और किसी न किसी रीज़न्स की वजह से, तो हमने उनमें से कोई 2 रीज़न्स जो हैं वो लिखने हैं इस तरीके से जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है. ओके, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स, नोटबुक्स एंड राइट डाउन द आंसर्स. द फर्स्ट वन इज़, Essen is feeling disturbed because the bus conductor always asks him to stand up and his friends make fun of him. Essen इस वजह से डिस्टर्ब फील कर रहा है कि बस कंडक्टर हमेशा उसे खड़े होने के लिए कहता और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते. ओके, वन मोर थिंग, आई हैव रिटन द रीजंस विद द ब्लैक पेन. ओके, एंड यू विल डू द सेम. द सेकेंड वन इज, फहद इज फीलिंग पेनलाइज्ड बिकॉज everyone points out his mistakes at the lunch and the dinner time, and he has stopped sitting with his family during the meal times. फहद इस वजह से पैनलाइज्ड फील कर रहा है कि जब भी वो दोपहर के खाने या रात के खाने पे घर वालों के साथ बैठता तो वो लोग उसकी मिस्टेक्स बताते और उसको डांटते. इस वजह से उसने घर वालों के साथ बैठ के खाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो पैनलाइज फील कर रहा है. ओके, next is Zan, and Zan is feeling unhappy because his grandparents always tell his parents that he is an ill-mannered child and they are not happy with him. Zan is feeling unhappy because his grandparents always tell his parents that he is an ill-mannered child and they are not happy with him. Zan इस वजह से अनहैप्पी है कि उसके जो नाना नानी या दादा दादी हैं वो उसके पेरेंट्स से ये कहते हैं कि जैन जो है वो इल मैनर्ड चाइल्ड है, यानी कि बदतमीज़ है, इसको तमीज़ नहीं आती और वो जैन से खुश नहीं है. दैट इज़ वाई जैन इज़ फीलिंग अनहैप्पी. द फोर्थ वन इज़, Rashid is feeling annoyed because one of his best friends is not friendly with him and he argues with him all the time. Rashid is feeling annoyed because one of his best friends is not friendly with him and he argues with him all the time.
राशिद इस वजह से अनॉय फील करता है कि उसका जो एक अच्छा दोस्त, उसके अच्छे दोस्तों में से एक अच्छा दोस्त जो है वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं है और हर वक्त उससे बहस करता है. दैट इज़ वाई राशिद इज़ फीलिंग annoyed. Next we have Sania, and Sania is feeling frustrated because she has a very dark complexion, and every time she sees people with a fairer skin color she feels inferior. Sania is feeling frustrated because she has a very dark complexion, and every time she sees people with a fairer skin color she feels inferior. सानिया इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी रंगत बहुत गहरी है, उसका रंग बहुत गहरा है, और जब कभी भी वो दूसरे लोगों को देखती है जिनका कलर साफ है, फेयर है, सो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई शी इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल and will do the work in the notebook. That's all for today. We will meet inshallah in the next class. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.